Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to everyone. Please confirm that the screen is visible and you can hear me. Yes, sir. Okay, the topic of our today's presentation and today's lecture would be discussing the types of retaining walls and the design of gravity retaining walls. It's a very practical and very interesting topic related to the foundation engineering, where we will also discuss at the end of our today's lecture the choice of backfill material and different drainage systems which will be provided for different backfill materials, for example, granular materials, and for the fine materials, how the drainage is enhanced using different mechanism and different systems. So starting with the types of retaining walls, uh, we usually see gravity walls, and these gravity walls are the very earliest retaining structures. They were often made of mortared stones or masonry or reinforced concrete, and they resist the lateral forces from the backfill material here. So this is the backfill material, and you have studied in Geotech 2 about the lateral earth pressures which are exerted onto the retaining wall. Now, the gravity retaining walls resist those lateral pressures due to the self weight of this structure. Okay, so self weight or the gravity of this massive structure resist those lateral pressures. There are piling walls as well, and sometimes people call them sheet pile walls. They are thin sheets, are made of the concrete. Or screen visible? जी सर. Okay, thank you. So as we discussed, we usually see these types of gravity retaining walls. Basically, these are constructed of huge and large particles. Stone or masonry or even the unreinforced concrete is used to construct these types of walls. Now, in order to reduce the amount of materials and used for these type of gravity walls, reinforced concrete walls or semi-gravity walls are also constructed. Gabion walls are the other types of gravity retaining walls, and you will see that cobble size of particles are used, and they look like rectangular structures from plan and from the elevation, the step form, and cages are provided. These are steel cages which are provided to confine these cobble size particles. So lateral pressures are applied from the left side, and due to the self weight of this gabion wall or the self weight of those uh, larger particles, they are trying to resist those lateral forces and pressures. There is another type of gravity retaining wall which is crib wall, and these crib wall are usually made of the open structures which are made from the concrete or precast concrete, and in between here granular particles are placed. Sometimes these precast concrete members are also made of
the timber members if we want to reduce the cost of that project. Looking at the cross sections of various gravity retaining walls, so if we see here, this is the gravity retaining wall. So the self weight of this retaining wall will act downwards, and the horizontal forces would be acting in the horizontal direction this way. This part which is away from the backfill is known as the toe of the retaining wall, and this part which is towards the backfill is known as the heel of the retaining wall. Now, as you can see here, the weight of the stem is acting downward, and similarly the weight of the base of the retaining wall will also act downwards, which will add to the stability of the retaining wall. But in addition to the weight of the stem and the weight of the base, there is another weight, which is the weight of the backfill, which is placed here. So this will also add into the stability of the retaining wall. Now, the horizontal forces would be acting on the backfill here. Therefore, the delta or the wall fraction would be equal to 0, because here we are having soil to soil interaction, but here at the base, if you see, this is the base of the wall. Now at this point, delta won't be equal to 0. Now if we assume a linear distribution beneath the base of the retaining wall, and if we are having an eccentric loading, eccentric means that the load is not applied at the center of the retaining wall, then we need to find out the point of location of the resultant, and the if you resolve the resultant into the vertical and horizontal forces which are acting onto the retaining wall. So we can clearly see the eccentricity is towards the left side of the retaining wall. Then we will see the maximum base pressure on the left side of the retaining wall, and the minimum base pressure would be acting on the right side of the retaining wall. This is the width of the retaining wall. Looking at the cross section of the gabion wall, so we will see rectangular shape structure here. Now if we want to see the cross section of the crib wall, so it will look like this one if it's inclined, but we can place vertically as well. Now this slide shows various failure modes for the rigid retaining walls. Now this is the dotted line shows the initial position of the retaining wall. So this was the initial position, and
lateral pressures are applied from the right side, and this will move the retaining wall from point A till point B. And this distance, which is delta x, is the distance which is traveled by the retaining wall, or its slided or the translational distance which occurred due to these lateral pressures. So this mode of the failure would be known as the sliding or the translational failure. There is another mode of failure which is known as the rotational or bearing capacity failure, or sometimes it's also known as overturning failure as well. So in that case, you can clearly see that those lateral pressures due to the backfill material, they have overturned the retaining wall. The third mode of failure would be the deep-seated failure. So what happens in the deep-seated failure, that a slip surface would occur globally, and as a whole this retaining wall will settle. In the third type of the failure mode is the structural failure mode. Now if the lateral pressures are so high and the tension which is created in at the intersection or at the joint of the stem of the retaining wall and the base of the retaining wall, a crack will appear, and this stem will experience, or this retaining wall will experience, a structural failure. So in our today's lecture, we will be focusing on these two modes of failure. Sir. Okay. Now, starting with the design of gravity retaining walls. So first of all, we need to find out the horizontal forces which are acting onto the retaining wall and the vertical forces which are acting onto the retaining walls. Okay. Then we need to find out the resultant and the point of application of the resultant as well. Information about the soil shear strength parameters and information about the water level is also recorded. Now we also need to note down the information about the planned and unplanned excavation, because if we are not sure about the excavation, so as I mentioned earlier on, the passive pressures which are exerted by that soil in front of the retaining wall is ignored in the design. The minimum depth of the retaining wall is recommended to be 0.5 meter. 10 kilopascal of the surcharge pressure is also recommended onto the backfill material. Now, as we discussed here, that in case of the cantilever wall, because there is no wall friction here, now in that case delta is taken as 0, and when the wall friction is 0, so it's better to use the Rankine's lateral earth pressure theory to find out the lateral earth pressure coefficient Ka. Now if you want to find out the location of the base resultant, which is here,
So if you want to find out this distance, because the overturning would occur at this point, so this distance needs to be provided, and I call that as the lever arm for the resultant force. So if we find out the moments which are occurring due to the horizontal forces and the moments due to the vertical forces, and if we sum those moments and we divide that by the vertical forces which are acting onto the retaining wall, you will get this distance or the lever arm for the resultant is acting at the base. Excuse me, sir. We will solve problems, so please kindly hold on to the questions till we solve the problems. Okay, now the eccentricity. We will also find out the eccentricity, and we need to make sure that the eccentricity should lie within the middle third and must not exceed the b by 6 value. And I will explain that as well in the coming slides. Now, if we want to find out the stability or the overturning stability of the retaining wall, we need to compare the resisting moment, and we also need to compare the overturning moments as well. So if the resisting moments, which is basically the moments which are occurring due to the vertical forces, if that's greater than the overturning moment, which is basically the horizontal forces, or the moments which are generated due to the horizontal forces, that in that case, the overturning limit state is satisfied. We need to find out the maximum base pressure. Basically, that is, if we take that plus sign and if you use this equation, you will get the P max, or the maximum base pressure. If you want to find out the P minimum, that would be using the minus sign in this equation. And this equation we also discussed in our earlier lectures, that the V is the vertical load and B is the width of the retaining wall, is the eccentricity. Again, B is the width of the retaining wall. Now, the sliding resistance can be found out at the base of the retaining wall using this equation, which is S equal to V tangent delta. V is the vertical load and delta is the wall friction. Now, if the sliding resistance is greater than the horizontal force, now in that case, the sliding limit state is satisfied. Now, the slide shows that if we are having a resultant which is acting at an eccentricity towards the left side of the retaining wall, this is the base of the retaining wall. So the maximum base pressure would act on the left side of this retaining wall, and the minimum base pressure would act on the right side of the retaining wall. Now, this would only occur if eccentricity is less than b by 6, and that b is the width of retaining wall. Now, if the eccentricity is equal to the b by 6, then the P max would be the maximum base pressure. But as you can see, the value of the P minimum would be equal to 0.
if a case occurs that the eccentricity is greater than b by 6 value, now in that case you can see that attention would be created in this zone here, or the heel of the wall will experience an uplift, and that occurs because the soil is very weak in tension and it gives strength in compression. Now we will solve two examples to understand and learn about the design of these retaining walls. So this is the example that a retaining wall is given here, and the surcharge pressure is applied here. We can take this part as the backfill, which is acting downwards, adding to the stability of the retaining wall. Thickness of the stem, thickness of the base is also given, width of the backfill material is given, height of the retaining wall is also given, shear strength parameters are given, the delta value is also given, unit weight of the backfill material, surcharge pressure, and the unit weight of the concrete is given. I have simplified and extracted the data here so we can solve this problem. So please kindly take a picture or a screenshot if you're on your laptops and note down the data. Now what we need to do here, that we need to find the horizontal forces and the vertical forces. Now what could be the horizontal forces and what could be the vertical forces in this case? You need to find out the horizontal forces, you need to find out the vertical forces. Okay, let me help you. If you remember from Geotech 2, we know that if surcharge is applied here, we can find out the lateral pressures, okay? And the lateral pressures can simply be find out multiplying the lateral pressure coefficient with the surcharge pressure. So this will give you the pressure, and if you want to find out the thrust or the force, so we simply multiply that with the height of the retaining wall or the backfill material, then you will get this value. And limit R for this force will be of the height of that retaining wall. The concept which we learned from Geotech 2, and we will find out this force, okay, and this force as well.
So what would be the value of, I would say, P1 and P2? I have calculated the value of Ka, which is the lateral earth pressure coefficient, and I have used सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। theory. Okay. Sir, your voice is not clear. Okay. Is it clear now? Yes, sir. अभी clear है. Okay, please calculate the P1 and P2. And if you remember from Geotech 2, that how we can find out the lateral thrust. So use the concept which we understood from Geotech 2 and give me the value of P1 and P2, which are exerted onto the retaining wall. This value. Is it clear now? All the values are given. You need to find out the lateral thrust, which is exerted due to the surcharge pressure and the backfill material. सर 64.44 64.44. Okay, we need to construct a table here. So let's construct a table. So this one would be 64.44. This is 14, first one. The first one is 14. Okay. Yes. This is 14 kilonewton per meter. And how about the second one? 64.44. So please kindly sum these two forces, because these are the horizontal forces, and we are going to use that in finding the overturning stability, sliding resistance. So all these summation we need to calculate. Okay, please kindly add. 78.44 Okay, 78 point. 44 Okay, what is 44? Now we need to find out the moment arms for these forces as well. So it would be simply half of the height of the retaining wall, and the moment arm for this one would be 1/3 from the base of the retaining wall. I guess it's 1.80.
Please kindly give me the moments values as well. 37.8, first one. 7.8. 27.8, and also the moments for 37.8. 37.8. Okay, let me check that. सर ये 115.9 है. This would be 37.8, 115.9. Okay, we need to add these two moments. And slight correction here, it's kilonewton meter per meter. Okay, now you need to add 153.8. Please kindly note down this value as well and this value as well. Now we need to find out the vertical forces which are acting due to the stem, base, and the backfill material. Now for stem, if we multiply the area with the unit weight of the concrete, again the area of the base and the unit weight of the concrete, so we will get the force which is exerted vertically. So what should be the height of the stem and the width of the stem? The unit weight is equal to, अब हमारे पास जो स्टेम की वजह से वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? रो वेट के बराबर होगी स्टेम की. Please kindly calculate and give me the value. The height of the stem is given, the width of the stem is given, and the unit weight of the concrete is also given. 38.07. 38.07. Okay. 38.07. And how about the base, the force which is exerted by the base of the retaining wall, and that would be also the vertical force which would be acting downwards? सर फर्स्ट वाली 35.25 है. 35.25. Okay. और बेस का 28.2. सर ये तो सही है ना सर? 35 point. I don't know. Yeah, I have the value which is close to this one. 35.3, sir. Now for the base one, I need another value, please. 28.2. Yeah, it's 28.2. And now for the soil, we are having the height here. What should be the height? So this one would be the height, I think. So we need to subtract the 0.4, this portion. 148.8 आ रही है. 148.8, और इन तीनों को आप ऐड कर लें प्लीज. गिव मी द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज. So 212.3.
Please kindly note down this value as well. 212.2. सर Okay. मुझे Yeah. No. सर मुझे अभी तक ये समझ नहीं है कि आपने इसको वर्टिकल में क्यों लिया, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं लिया। कौन सा वाला? सर ये जो साइल का है। मैंने आपको बताया ना कि इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन, ये जो बैकफिल मटेरियल है, इसको हम डाउनवर्ड या वर्टिकल फोर्सेस में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये वर्टिकल फोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं बैकफिल मटेरियल की वजह से, स्टेम की वजह से, और हमारे पास बेस की वजह से। बाकी ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये सरचार्ज की वजह से, जो कांस्टेंट के ए क्यू से हम इस प्रेशर को फाइंड करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या होगा, एच से इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हमारे पास ओवरऑल जो स्टेबिलिटी ऑफ द रिटेनिंग वॉल है, उसमें हमारे पास रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ आइए कि नहीं? तो ये सर अभी समझ गए। सर वेट ऑफ द सोइल क्या है तल टाउन के लिए? 1.75। So what should be the moment arm for the stem, for the base, and for the soil? स्टेम के सर लिए किस 0 जगह होगा सर। सर किस जगह पर मोमेंट 0 ले लेते, क्योंकि अगर क्वेश्चन किस? सर ये तो कंसेंट्रिक नहीं है, तो ये कहाँ से ले रहे सर? हाँ जी, सर मोमेंट आरएम को फाइंड करने के लिए मोमेंट को एक जगह पर 0 लेना पड़ेगा। कहाँ पर 0 ले ले मोमेंट को? अबाउट द टो जीरो ले लें। सर बेस के लिए 35.25। ठीक है, इस टो पे आपने इसको 0 ले लेना है। मोमेंट्स इस पॉइंट पे आपने 0 लेना है। वैसे आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। ओवरऑल आपने करना ये है कि आपने जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसके समेशन को फिर फाइंड करना है, जो हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Now if you want to find out the moment arm for the stem here,
So basically we need to find out this and the total distance or the width of the base is equal to 3. Now we need to subtract this part, which is 1.75 meter, and we need to subtract the half width of the stem as well, which would be and I guess the lever arm for the force which is exerted due to the weight of the stem would be equal to 1.1 meter. सर Yes, please. हम ये टू और जो ही लेंथ है इसको हम डिफरेंट क्यों लेते हैं, इसको हम सेम क्यों नहीं लेते कि ताकि हमारे पास कंसेंट्रिक जो लोड है वो आ जाए। क्यों? प्लीज काइंडली रिपीट करें अपने क्वेश्चन को। सर ये जो टू लेंथ है और ही लेंथ है इसको हमने यहाँ पर डिफरेंट किया है, इसको हम सेम क्यों नहीं लेते ताकि हमारे पास जो लोड है वो कंसेंट्रिक आ जाए। सर यहाँ पर तो इंसेंट्रिक है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है सर लोड में। प्लीज काइंडली अपने क्वेश्चन को रिपीट करें। सर यहाँ पर जो टू लेंथ और ही लेंथ हम लेते हैं इसको हम सेम क्यों नहीं लेते सर, यहाँ पर डिफरेंट जो लिया टो ये लेंथ क्यों और लिया है? हिल लेंथ, टो लेंथ और हिल लेंथ क्या मतलब है? टो और हमारे पास हिल तो 3 मीटर है ना, तो बेस का हम 3 मीटर नहीं ले रहे हैं। सर यहाँ पर ये जो हील है ये सर कम है सर, टो जो है कम है, तो हील की लेंथ जो ज़्यादा है सर, तो इसको हम सेम क्यों नहीं लेते सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर। यार टो और हील की लेंथ देखें, खुद सोचें कि टो और हील की लेंथ कैसे हम सेम लेंगे। हम बेस की और स्टेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बेस की और स्टेम की बात, सर ये स्टेम से लेफ्ट और राइट पे जो डिस्टेंस है 1.75 का, ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम क्यों नहीं है लेफ्ट और राइट का। क्या मतलब लेफ्ट और राइट सेम क्यों नहीं है? तो जो है और हील जो है सर, इनकी लेंथ ये कह रहे हैं कि सेम क्यों नहीं है। यार ये हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, अब एक प्रॉब्लम गिवन है उसमें एक सिचुएशन है कि यार उसकी एक्सेंट्रिसिटी इतनी है, ठीक है, उसकी जो लोडिंग कंडीशन है वो गिवन है, तो उस चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये सेम क्यों नहीं लेते हैं। सेम मैंने इस प्रॉब्लम को तो नहीं बनाया ना, आप खुद देखेंगे ये एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन हमारे पास गिवन है और उस रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी को और टर्निंग की स्टेबिलिटी को हमने चेक करना है, बियरिंग कैपेसिटी को हमने चेक करना है और उसके बाद हमारे पास स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को उसका चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप उसको देखें, बैकफिल मटेरियल है, बैकफिल मटेरियल उसके ऊपर ज्यादा आ रहा है जो हमारे पास लोड अप्लाई करे, ठीक है। जितना ज्यादा उसके ऊपर वेट ऑफ द सॉइल एक्ट करेगा तो उतना ही उसकी स्टेबिलिटी में उसका रोल ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इस स्टेम को लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास बैकफिल मटेरियल ज्यादा उसके ऊपर आएगा जो कि कैंटिलीवर वॉल है। तो जो हमारे पास डाउनवर्ड या वर्टिकल फोर्सेस हैं ड्यू टू द वेट ऑफ द बैकफिल, दैट विल एड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिटेनिंग वॉल। आइए समझ के नहीं आए? ओके सर। और बाकी ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत हम स्टार्ट ले रहे हैं इसका जो रिटेनिंग वॉल का, तो अभी तक
इसको एक प्रॉब्लम जो है ना हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन गिवन है, अभी हमने इसको असेस करना है कि इसकी जो ओवरटर्निंग स्टेबिलिटी है और इसकी हमारे पास स्लाइडिंग रेजिस्टेंस है, या जो दो मोड्स ऑफ फेलियर हैं वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन है। मोमेंट आर्म फॉर द बेस वो तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ दी 3 meter would be 1.5, or for the soil 2.12 2.12। ठीक है, अब मोमेंट्स मुझे दे दें प्लीज। 38.77 फर्स्ट के लिए, 38.77, 42.3, 42.3, 315.45, 45। इसका समीशन भी दे दें इब्रार प्लीज। 396.5, अच्छा, now we got the vertical movements and we got the horizontal movements are the moments due to the horizontal forces, are the moments due to the vertical forces. So these are known as stabilizing moments and these are known as destabilizing moments. So we need to subtract the destabilizing moments from the stabilizing moments. So please kindly give me the sum of the moments as well. 242.7. 242.7. ठीक है, please kindly note down this value as well. The summation of the vertical movements are the movements which are occurring due to the vertical forces. This one, this one, this one, this one, and the horizontal and the vertical forces. Now please kindly give me the sliding resistance. What should be the sliding base resistance? उज़ैर, स्लाइडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सर वो फ्रिक्शन एंगल कितनी थी? 27 थी ना? यस, ठीक है सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर 108.17। 108.17. ओके। लेवर आर्म की मुझे वैल्यू दे दें, लेवर आर्म की फॉर बेस रेजिस्टेंस रिजल्टेंट, सॉरी। वन 1.14। 1.14।
ओके, तो ये आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। Now we can also find out the factor of safety against overturning if we compare the stabilizing moments। तो ये हमारे पास और ये हमारे पास डिस्टेबलाइजिंग। इसकी वैल्यू आपकी 2.6 है, ठीक है। So we can clearly see that the moments which are occurring due to the vertical forces is greater than the destabilizing moments. So therefore, the overturning limit state is satisfied, or we can say it's okay. Now for the eccentricity, we can simply use this equation. So it would be 3 divided by 2 minus 1.15. So what should be the value of the eccentricity? 0.4. 0.4. Now we can also check those three conditions which we discussed in our lecture in earlier today. 0.35. Okay, 0.35. Okay, this one is 0.35. So we can check that whether the eccentricity is less than b by 6, or it's equal to b by 6, or it's greater than b by 6. So we know that b by 6 would be equal to 0.5. Now the eccentricity is less than 0.35 is less than 0.5. Therefore, we will be having p max and p minimum values. Please kindly give me the p max and p minimum values as well. सर Phoenix 120 आ रहा है। 120, okay. 224 आ रहा है सर मेरे साथ। 120 मुझे सही लग रहा है। सर P minimum 36 आ रहा है। 36 गलत है। कर रहे हैं दोबारा। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास 0.35 है। वर्टिकल लोड जो है ना वो हमारे पास 212.3 है, विड्थ 3 है, 21.23. 3, okay, that seems reasonable. Now I have a question. If we want to find out the bearing capacity limit state, how we will find out? उज़ैर, उसामा, bearing capacity limit state के लिए हम क्या करें? सर वो जो थ्योरी है सर भाई थ्योरी है मैं आपको यूज कर लूंगा। तिरज़ागी थ्योरी या मेयरहोफ की थ्योरी हम यूज करेंगे और उससे हम
बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल निकालेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे सॉल्व किया नहीं किया, लेकिन दूसरे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया, थोड़ा बहुत, ठीक है, कि उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। समझ आइए इब्रार आपको? यस सर। ओके। मशाल, जनीता, उस्मान, समझ आइए आपको जो मैंने क्वेश्चन किया है? Yes, sir. जी सर। ओके। अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने इसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी कंपेयर करनी है, तो आपने जो मैक्सिमम बेस प्रेशर है और मिनिमम बेस प्रेशर है उसको निकालना है, और फिर आपने देखना है कि जो मैक्सिमम बेस प्रेशर है उसकी जो वैल्यू है वो आपने आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी आपने निकाली हुई है यूजिंग मेयरहोफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट्रिक लोडिंग है तो तरजागी की जो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बेटर इट वुड बी कि आप मेयरहोफ की बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, शेप फैक्टर्स हैं, या हमारे पास जो इंक्लिनेशन फैक्टर्स हैं, उसको फाइंड करें और उससे फिर आप कंपेरिजन करें। थोड़ा सा आइडिया जो है ना दूसरे प्रॉब्लम एग्जांपल में जो है ना वो गिवन भी है। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग दे दें प्लीज। One point three eight. 1.38। ना हमसे जो पूछा गया था वो ये था कि इज द डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल सेटिस्फैक्टरी। अगर हमारे पास ये सॉइल की कंडीशंस होती हैं, अगर हमारे पास ये डायमेंशंस रिटेनिंग वॉल की होती हैं, अगर हमारे पास ये सरचार्ज की पोजीशन होती है, तो उसके बेसिस पे आपने कमेंट ये करना था कि इज द डिजाइन ऑफ द वॉल सेटिस्फैक्टरी। तो अब हम क्या कहेंगे? देखिए हमारे पास ओवरटर्निंग, लिमिट स्टेट जो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है, और हमारे पास स्लाइडिंग लिमिट स्टेट भी सेटिस्फाई हो रहा है। So we can say that the design of the retaining wall is satisfactory. Now we are given with another example where we need to find out that whether the design of the retaining wall is satisfactory or not. So please kindly take a screenshot or take a picture of this screen, because we are going to use in solving our next problem or the example where inclined retaining wall is given and inclined surface is also given. So this is the inclined retaining wall. Dimensions or the width of the retaining wall is 2.75 meter. This is alpha, this is beta,
Okay, height is given, width of this portion, and the stem is also given. Unit weight of the wall is given, unit weight of the backfill material, shear strength parameters, wall friction. Okay, one extra thing is that they have given us the allowable bearing capacity of the soil as well. Now here we can compare the P max and the P minimum, or the maximum base pressure and the minimum base pressure. Now how we are going to solve this? Which theory we are going to use and why we are going to use that theory? रेंकिन फेल्योर थ्योरी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल है। हम रैंकिन फेलियर थ्योरी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे फेलियर है। शाबाश। और कोई? सर एंगल है सर। एंगल है, अच्छा। और उज़ैर? सर वो नाम तो मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पर जो सरचार्ज है वो कुछ एंगल पे आई थिंक कॉलम थ्योरी है या मॉडिफाइड या रैंकिन, उसमें यूज करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। अच्छा, कुलम सही है, थोड़ा बहुत तो जानने करीब हुए हैं। क्यों कुलम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि सर वो बीटा बीटा के वाला है ना सर, वो इंक्लाइंड अच्छा, है इंक्लाइंड जो है ना सरफेस है, तो उज़ैर कह रहे हैं कि इसलिए हम कुलम की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट ओपिनियंस आई हैं, तो थर्ड ओपिनियन भी ले लेते हैं कि रैंकिन इस्तेमाल करें या कुलम इस्तेमाल करें। सॉरी सर, कूलम ही यूज करेंगे सर। अच्छा, कुलम इस्तेमाल करेंगे। इंक्लाइंड सरफेस हमारे पास हो और इंक्लाइंड रिटेनिंग वॉल हो, तो उस केस में हम कुलम की फेलियर थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वॉल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। वॉल फ्रैक्शन क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास सॉइल टू सॉइल फ्रैक्शन था, तो इसलिए हमने वॉल फ्रैक्शन इग्नोर किया था। यहाँ पे डेल्टा हमारे पास जीरो नहीं होगा, और जब डेल्टा जीरो नहीं होगा तो हमारे पास जो के ए की वैल्यू है, जो लेटरल प्रेशर कोएफिशिएंट की वैल्यू है, वो हम कूलम्स थ्योरी से लेते हैं, और वो जो कूलम्स थ्योरी से हम लेते हैं वो ये इक्वेशन है। प्लीज काइंडली ये इक्वेशन आप अपने पास नोट डाउन कर लें, या इसकी पिक्चर ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फा है, सो अल्फा इज द inclination of the retaining wall, phi is the friction angle of the soil, which we get from the lab tests like direct shear test or triaxial test. Delta is the wall friction, which we can also measure using the direct shear test, and we discussed that in good detail in our UTech 2 class. Beta is the sloping surface, or the angle which the surface makes with the horizontal, and the approximate location of the application of the lateral thrust would, we can take that from the 1/3 from the base of the retaining wall. Okay, so is the design of the wall satisfactory? We need to find out the Ka. Please kindly give me the value of Ka, lateral pressure coefficient. Alpha, beta, phi prime, and delta is given. 0.48. 0.48. Please kindly note down this value because we are going to use this in coming slides there. Okay. Now we need to find out the lateral thrust. This value.
What's the value of the unit weight? 18. And the height of the wall is 6. Okay. Now we need to find out the lateral thrust which would be exerted onto the retaining wall due to the backfill material. 155.5. 154.5. Now, if you see here, we can resolve that lateral thrust in the horizontal and vertical component as well. Okay, and the vertical component will be exerted here. So this would be the resultant R, this would be the vertical, and this one would be the horizontal force which would be exerted onto the retaining wall. And then we need to find out the horizontal forces and vertical forces. Now this one is the one component which would be acting downwards or vertically. Then the weight of this retaining wall will also be acting downwards. Now in order to do that, we need to divide the retaining wall into number of portions or parts. So if I say this is 1, 2, 3, and 4, the force which is exerted downward due to this portion of the retaining wall and then this portion of the retaining wall, and if we take the moments about the toe equal to 0 and about this one and at the mid of this fourth part as well. So we need to find out those lever arms for each and every part. First we need to find out the magnitudes and then we need to find out the lever arms. So what should be the value of the horizontal component of the lateral earth pressure or the lateral thrust or the force? 125.8. 125.8. And this could be the only horizontal force. 91.4. 91.4. Okay, that's good. How about the moment arm for the horizontal force? Give you a hint, 1/3 from the base. Third of No, the sir. height from base. Now give me the moment as well. 251.6. 251.6. Okay, I will give you the value for the moment arm for the horizontal component. It will be 2.40 and the moments would be equal to 219.36. yeah, this one. So you can note down these moments and these horizontal forces, but we need to calculate the vertical forces due to the wall, and that's a bit tricky. Now in order to do that, we have done the resolving the resultant, which is equal to
TA. Now we need to divide this retaining wall. Now this should be the location, and this distance we need to find out. Okay, and then for the second case, this should be the moment arm, and for the third part, this should be the moment arm, and for the fourth part, this should be the moment arm. So first we need to find out the area. Once you find out the area, then you need to multiply with the unit weight of the wall, and this will give you the force which would be exerted, the magnitude of the force. And then by simple calculations you can easily find out the moment arms for this force for each area. So I have simplified that for you people, that half of h, or height of the first portion of the retaining wall, the width of the first portion of the retaining wall, and the unit weight of the wall, which is 23.5 kilonewton per cubic meter. Please kindly quickly do these calculations for me. What should be the height for the first part? सिक्स होगा सर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देना प्लीज जल्दी से। सर 6 तो नहीं होगा सर, 6 थोड़ा वो 4 पोर्शन भी है ना सर इसके साथ। उज़ैर किधर चले गए हैं? उज़ैर जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो फिर आप किधर चले जाते हैं? शाबाश, जल्दी से करें। सर ये लड़कियों ने इतना कैलकुलेशन किया, मैं हैरान हूं सर। तो हाफ एच बी, ठीक है, सारे जो पैरामीटर्स हैं वो तो गिवन है। 74.025। देखिए आमना ने जवाब दे दिया। मैंने डेटा नोट नहीं किया इसको कुछ। शाबाश, चला गया यार। ये हमारे पास 74 आ जाएगा, h इंटू बी इंटू गैमा ऑफ वॉल। तो इस केस में भी हमारे पास h जो है ना वो 6 मीटर होगा, b 0.7 होगा, और ये हमारे पास 98.7 आ जाएगा। ठीक है, फॉर द थर्ड पार्ट वो हमारे पास h कितना होगा? h हमारे पास 5.25 होगा, b हमारे पास 0.5 होगा। ठीक है, तो जो बेस की विड्थ है वो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। बेस की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो 0.75 मीटर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.8। फिर हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसका हाइट 0.75 है, और विड्थ हमारे पास 3 मीटर है, सॉरी 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर हमारे पास किससे आता है? 1 मीटर हमारे पास ऐसे आता है। ये देखें, ये हमारे पास है 0.5, और ये भी हमारे पास है 0.5। ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए हमारे पास जो विड्थ है वो 1 हो जाएगा, और जो हाइट है वो हमारे पास 0.75 हो जाएगा। उस्मान ने जो बात
कही है, तो इसकी जो हाइट है ना वो हमारे पास 6 मीटर ही रहेगी उसमें। ठीक है, बाकी इसकी भी हाइट 6 मीटर रहेगी, विड्थ जो है ना वो चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17.6 किलोन्यूटन पर मीटर। और इसके लिए अगर आप मोमेंट आर्म्स फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 2.05, 1.35, 0.83 और 0.50 आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी मोमेंट्स आप काइंडली मुझे दे दें जल्दी से। ओके, 151.75, 133.2. 8.8। ठीक है। ओके, हमारे पास जो मोमेंट्स ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, वो हमारे पास 538.7 आ जाएगा। सही है, इसके पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, 0.2 है यहाँ पे और 0.6 है यहाँ पे। सही है। Now these are the moments, we can also call those as stabilizing moments. And this one we can call destabilizing moment. So we need to subtract 251.6 from this value, so we'll get the summation of moments, and the summation of moments would be 287.1 kilonewton meter per meter. Now you need to give me the overturning limit state, bearing limit state, or sliding limit state as well. हम कैसे फाइंड करेंगे ओवरटर्निंग लिमिट स्टेट, हम कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Stabilizing to destabilizing के लिए फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी, तो stabilizing to destabilizing रेशो ले लेंगे तो फाइंड हो जाएगा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज काइंडली आप रिपीट कर लें। सर स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग को इक्वेट कर लेंगे तो इससे आ जाएगी। अच्छा, तो इक्वेट करें ना इसको, मुझे आप वैल्यू दें ना जल्दी से। अभी क्लास में नहीं करेंगे तो किधर करेंगे? क्लास के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कैलकुलेशन करने का, इसके बाद फिर क्लास के टाइम में आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कब कैलकुलेट करेंगे? शाबाश, मुझे वैल्यू दें इसकी।
स्टेबलाइजिंग मूवमेंट्स आपके पास हैं, डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट्स आपके पास हैं, तो उसके साथ कंपेयर करें। 2.14। 2.14 इस तरह कुछ वैल्यू दे दें मुझे, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये हमारे पास ओवरटर्निंग मूवमेंट्स जो है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स ओके। नाउ आपने मुझे बियरिंग लिमिट स्टेट भी देना है। बियरिंग लिमिट स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बियरिंग लिमिट स्टेट पे कमेंट करें इस रिटेनिंग वॉल की, तो आप कैसे करेंगे? तिरजाई। तिरजागी के नहीं साथ सर, क्यों करेंगे? सर हाँ, वी तिरजाग टेंजेंट पी मैक्स पी वो मिन जो था। इक्वेशन था हमारे पास सर, वी टेंजेंट गेमा था डिवाइड बाय एच, कुछ इस तरह इक्वेशन। चले सही है। वकार वकार आज खामोश है, इकरार भी खामोश है, क्यों? वकार बियरिंग कैपेसिटी लिमिट स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सर वो पी मैक्सिमम और पी मिनिमम की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर वो जो हमारे पास स्टेबलाइजिंग है उसके साथ कंपेयर करके, अगर स्टेबलाइजिंग बड़ा हो सर तो वो मतलब स्टेबल होगा। आमना आप बता दें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सर पी अलाउेबल हमें गिवन है सर, उसके साथ कंपेयरिंग करेंगे अभी सही तिरजागी जवाब वाले। दिया। हाँ अभी सवाल सही जवाब दिया, ठीक है ना। तरजागी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तरजागी की तरफ आप नहीं जा सकते हैं, और आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फिर आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? और फिर कहेंगे कि 2 घंटे का पेपर किसने पूछा था क्वेश्चन? वो कमेंट में क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछा था कि सर ये 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप तरजागी की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की गलती करेंगे, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप टू द पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है उसको आप आंसर करते हैं और उसको देखते हैं, फिर वो 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा पेपर आपका, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करें कि जो गिवन हो उसको पहले आप देखें। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो गिवन को आप फाइंड करने पे लग जाएंगे, तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर तो आपका डेफिनेटली टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा। अच्छा ठीक है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज दे सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास, अगर हमने लिवर आर्म फाइंड करना हो, तो उसको हम समेशन ऑफ मोमेंट्स से, और ये कैलकुलेट करते जाएं प्लीज जल्दी से, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करना हो तो b/2 माइनस LR हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्टिकल मोमेंट्स को और उसको कंपेयर करें तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी यहाँ से। ये हमारे पास 0.92 आना चाहिए। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास 0.55 मीटर आनी चाहिए, और ये आपने कहा था कि 2.14 कितना आ रहा है वो आप कंफर्म कर लें, ठीक है ना। अच्छा, बाकी हमारे पास पी मैक्स जो कि टॉप पे एक्ट करेगा, वो हमारे पास इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। पी मिनिमम हमारे पास है, ये हमारे पास हील पे है, माइनस 6, इसकी वैल्यू आप दे दें प्लीज जल्दी से। और यू नीड टू रिमेंबर दैट पी अलाइबल जो कि बियरिंग कैपेसिटी है हमारे पास, वो कितना है? वो 250 किलो पास्कल है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कैलकुलेट करें जल्दी से, शाबाश। चलिए इसको घर पे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, इसकी स्लाइडिंग रेजिस्टेंस या स्लाइडिंग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, बेस रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। डेल्टा गिवन है 26 डिग्री है, वर्टिकल
लोड आप टेबल से उठा सकते हैं और फिर H के साथ कंपेयर करें. If H is greater than, if S is greater than H, then sliding limit state is also satisfied. मैं आपको इसकी वैल्यू दे सकता हूं. ये हमारे पास कितना है, 152.4 kilonewton. And what's the value of H? H हमारे पास कितना है? आवाज आ रही है कि नहीं रही, वो तो कंफर्म कर लेना प्लीज. जी सर, यस सर, क्लियर. हाँ ना, ये हमारे पास किलोमीटर हो जाएगा. So S is greater than H. That's why the sliding limit state is okay. बाकी हमारे पास क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है. बाकी हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है, चॉइस ऑफ बैकफिल है. चॉइस ऑफ बैकफिल जो है ना, वो थोड़ा फर्स्ट जो पैरा है वो रीड करने पर आप प्लीज करनी जल्दी से. सर कौन सा रीड करो? ये फर्स्ट पैराग्राफ, चॉइस ऑफ बैकफिल मटेरियल. The ideal backfill material is granular, such as suitability graded stone, gravel, or clean sand with small percentage of fines. Such soil is free-draining and of good durability and strength, but unfortunately it can be expensive even when obtained locally. Economies can sometimes be achieved by using granular material and retaining wall construction in the form of wedge as shown in the figure 6.21. The wedge separates the finer material making up the bulk of the backfill from the back of the wall. With Okay, such, that's fine. That's fine. Okay, so you can see that it's preferable that if we construct retaining wall to place granular materials here, but if it's really costly, then we can make a wedge here and we can place the granular materials here. And why we place the granular material? The granular materials are placed because to enhance the drainage of the pore water pressure which is generated. The pore water pressure needs to be dissipated during the excessive rainfalls, which will not exert significant lateral pressures or the hydrostatic pressures, which we studied in Geotech 2. Now, in order to enhance the drainage, weep holes are provided. Okay, and you might have seen these weep holes when you are going to Murray, Ayubia, Abbottabad. So you will see such types of weep holes, and these are provided just to enhance the seepage. Okay, and you can clearly see the height of this retaining wall is significantly greater. And how you can do that, you can clearly see the size of the vehicles are very small. The height was huge. What is the another reason for this retaining wall failure? drainage allow नहीं था. shear strength कुछ हुआ. Shear strength. Okay, shear strength was low. That's a good point. Drainage was not allowed. Now, how we can see that the drainage was not allowed? We don't see, clearly that where are these weep holes. The second one is that we can see lots of vegetation. Vegetation are grown here. It means that lots of moisture was present in this soil. So improper drainage, I would call that. Drainage could be the reason. Now, the third point which Uzair mentioned is very critical. He's saying about the shear strength. Now, if you see here, these, to erase that, the soil seems to be clay soil,
and the permeability of that soil is very, very low. And if the rainfall occurs here, or if now that picture is taken in the morning, so I don't know when the retaining wall failed, but the backfill material seems to be the fine grained materials, so that can also lead to the failure of the retaining wall. So these are the reasons that you can estimate that why the failure occurred. So we need to enhance the drainage of the granular backfill, and for that purpose we need to use the gravel pockets. Okay, then we need to use granular backfill gravel pockets so that it won't clog the weep holes. And the filter materials are used. Open jointed pipes are used to enhance the drainage in the granular backfill. With fine sand, if we mix granular backfill with the fine sand, silt, or clay, so sometimes it's preferable to use the vertical filters so that it will not allow the finer particles to clog those weep holes. If we want to use the drainage system for clay backfill, so continuous blankets or those filters are used, or the filter strips are used, or we can also use filter strip with the inclined continuous filter blanket. So these are the different mechanisms which can enhance the drainage of the retaining wall, and it can significantly reduce the hydrostatic forces, which we studied in greater detail in GeoTech 2. So thank you very much for listening very patiently. Now we will move towards our question and answer session.